Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to discuss the chairs by using UNESCO, which is prescribed in the syllabus of BBMQ in semester 1. So here I will discuss this question: define theatre of absurd and discuss the chairs as an absurd play. So if you like the content, then please like, share and subscribe my channel to get the notification of more videos. Now let's move to the question. So अगर discuss the chairs as an absurd play के जगह absurd tragic farce हो तो भी हम यही आंसर लिखेंगे. अगर हमें थीम absurdity को डिफाइन करना हो देन हम लोग ये भी आंसर हम लोग ऐड कर सकते हैं. Now, the term theatre of absurd is coined by the critic Martin Esslin. So, this term is coined by Martin Esslin. Now, the term is derived from an essay by the French philosopher Albert Camus. ये जो term है ये derived जो है एक essay से है that was written by Albert Camus, who was a French philosopher. And the term absurd का मीन्स होता है nonsensical, opposed to reasons, something silly, foolish, senseless and ridiculous. So moreover, the absurd play or drama contains the situation which has nothing at all productive. अगर आप एक absurd play और drama में देखोगे तो उसमें कुछ भी देखा जाए तो कुछ भी आपको productive नहीं मिलेगा उसमें. Albert Camus, in his work Myth of Sisyphus, he defines human situation as basically meaningless and absurd. So, in the Myth of Sisyphus, Camus defined that human situation जो होता है basically वो meaningless होता है और absurd होता है. Okay, and he believes that, please mark these lines, man is an alien in this universe and he is sent to a permanent exile. Now, absurd theatre incorporated Albert Camus theory, the myth of Sisyphus. Now, Albert Camus का जो theory है in the myth of the Sisyphus, this is a work by Albert Camus. So, इसमें इसने describe किया है that Sisyphus is a man जो कि stuck रहता है एक endless cycle of meaningless act में. What he was doing now he was pushing the boulder means एक large rock type का एक बड़ा सा चट्टान टाइप का, वो उसको हमेशा हिल से उसको नीचे की ओर लाता, नीचे से वो ऊपर की ओर, एंड ही इज़ डूइंग दिस रिपीटेडली टिल द एंड ऑफ द टाइम, अपने पूरा टिल द एंड ऑफ द टाइम. ओके, सो ये जो है ये रिफ्लेक्ट करता है एब्सर्डिटी को. तो ये जो फॉर्म ऑफ थिएटर है फोकस करता है किस पे, एब्सर्डिटी नेचर को, एब्सर्डिस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पे जो वो लैक करता है, जहाँ पे किसी का उसका मीनिंग नहीं, वहाँ कुछ पर्पस नहीं है. सो इसमें प्रोमिनेंट नेम्स जो हैं कुछ राइटर्स के हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड में, दैट इज सैमुअल बेकेट, आर्थर अडाम्स, Jean Genet and Eugene Ionesco. Absurdist play lacked structure, form and violated every norm followed by the plays earlier. Now, an important reason behind the same was to show the change in the human society that also lacked a sense of a structure and was devoid of the purpose and meaning post-war. Existentialism, alienation, anxiety and trauma form the vital themes along with the loss of the meaning. Okay, isolation and de-evaluated language. So using Ionesco, the chairs presented themes in a similar manner. तो आपको the chairs में भी यही सब theme जो हैं आपको मिलेंगे. Now we will talk about the chairs as an absurdist play, okay, or as an absurdist tragic farce. So it was written in 1952 by one of the most famous absurdist playwright Eugene Ionesco, and Ionesco was considered as the existentialist along with the Jean-Paul Sartre. Now this is also an important figure. Okay, the central figure of the chairs by Ionesco is an old man. Okay,
The old man is 95 years old and is married to the old woman. Now he works as a multi-purpose man on the anonymous desert island where they reside. The names are also absurd in nature. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि names भी जो हैं उनके absurd है nature में. Only old man, old woman. Okay. Now he works as a multi-purpose man, but still he does not know anything worthy. The old man is a genuine symbol of absurdity. यहाँ पे क्यों हम एक old man को genuine symbol of absurdity करें? Because his actions are absurd in the play. His message seems absurd. उसका message भी जो है वो भी absurd है. That means illogical है, बेतुका है, कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है, मीनिंगलेस है. एब्सर्ड का मतलब ही होता है मीनिंगलेस, सेंसलेस. ओके. And all that he does in the play seems absurd. The play begins with the old man and woman indulging in nonsensical discussion about themselves with a constant repetition of dialogues. Okay. So अगर हम ये जब प्ले स्टार्ट होता है, देन ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन जो है वो एक नॉनसेंसिकल डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें वो इंडल्ज हैं, और जहाँ पे एक ही डायलॉग को बार बार रिपीटेशन हो रहा है. So it is absurd. Okay. Now they then begin with the arrangement of chairs as their individual guests arrive and they begin having disconnected conversation with them. तो फिर वो चेयर्स के भी अरेंजमेंट लगाने स्टार्ट कर देते हैं, बट देयर इज़ नो गेस्ट, देयर आर इनविजिबल गेस्ट. सो और उनके साथ एक conversation वो स्टार्ट कर सकते विच इज़ डिसकनेक्टेड. ओके. द रेस्ट ऑफ द प्ले शोकेसेस देयर ग्रॉस्टिक्यू थॉट्स थ्रू डिस्कशंस. सो अगर आप प्ले में देखोगे तो उनके जो थॉट्स हैं दे आर वेरी स्ट्रेंज, दे आर वेरी अगली. ओके. According to his wife, the old man is an intelligent man and has lots of potential but did not make use of it in his life. So उसकी wife के according, that means old woman के according, old man के पास जो है ना वो बहुत ही intelligent man है और उसके बाद बहुत potential है कि वो उस potential को कहीं use कर सके, but वो अपने life में कुछ उसका use नहीं कर पाया. So उसके पास एक message है जो कि वो 40 years से उस मैसेज को कन्वे करने के लिए या वर्ल्ड में रिवील करने के लिए वो वेट कर रहा है उस मैसेज को रिवील करने के लिए. तो वो कहता भी है, मार्क दिस लाइन्स, आई हैव अ मैसेज दैट्स गॉड ट्रूथ, आई स्ट्रगल अ मिशन, आई हैव समथिंग टू से, अ मैसेज टू कम्युनिकेट टू ह्यूमैनिटी, टू मैनकाइंड. सो दिस इज द मैसेज. ओके. Now the old man is stuck in a repetitive existence, retelling the same story and performing the same imitation day after day. Okay, he can barely even move forward, his narrative hardly ever getting past. Then at last we arrived. He appears to be depressed of this when he says to the old woman again, I am sick of it. Then at last we arrived. That again, you always ask for the same thing. So these are the repetitive conversation which is going. Okay. In fact, he is not entirely sure that what does come next. उसको वो भी नहीं पता है कि उसके बाद आगे क्या होने वाला, और इसको ये भी नहीं पता स्टोरी में कि उसके आगे क्या होने वाला या उसके लाइफ में क्या होने वाला है आगे. And the old man is such a prisoner of this repetition that he is at times childish, कभी वो childish जैसा भी हो जाता है. फिर disapproving is 95 years, वो बोलता है नहीं मैं भी 95 years का नहीं हूँ, disproving भी करने लगता है. And sometimes he call his wife his mother, his father at one point. Okay. So these are the absurdity going on. Now he seems to have been bored of this and commit suicide at the end because of this. So ये सब से वो बार बार बोर हो गया है तो वो लास्ट में वो सुसाइड कमिट करना चाहता है. एंड सो यहाँ पे एक जेन्यून सिंबल ऑफ एब्सर्डिटी को एक ओल्ड मैन को हम देख रहे हैं, जो कि एक ओल्ड मैन जो है. ठीक है.
Now, Ionesco, through the character of Old Man, seems to suggest the very idea of the theatre of absurd, that man is living in this universe with no purpose and he is confused, troubled, and in clear danger. So, we can compare the character of the old man with his idea, as his life does not have any real purpose except that so called mess. सो मैसेज को छोड़ के उसका लाइफ में कोई एक रियल पर्पस नहीं है, ठीक है, उस ओल्ड मैन के लाइफ में. एंड ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग सीरियस ऑल्सो थ्रू आउट हिज लाइफ. एंड मोर ओवर वॉट ही इज़ कन्फ्यूज, वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है अपने लाइफ में. एंड ट्रवल्ड ऑल्सो. ओके, सो troubled as well as was in complete danger, and he finally lost his wife. और ultimately वो commit ही कर लेता है suicide, so he lost his life also, and proving this idea of the theatre of absurd. The old man was not done anything in his entire life, but he conveyed the importance of life. उसने कुछ तो अपने लाइफ में अचीव किया नहीं, बट उसने एक लाइफ की जो इम्पोर्टेंस होती है उस मैसेज को वो कन्वर्ट करने की कोशिश किया, बट अल्टीमेटली वो भी ना हो पाया लास्ट में. However, he commits suicide, क्योंकि वो कमिट कर लेता है सुसाइड बिफोर रिवीलिंग हिज मैसेज टू द वर्ल्ड. ओके, ही थ्रोज हिमसेल्फ आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से कूद जाता है. Okay, and in fact, with the failure of the orator, he also hires an orator who doesn't speak anything. So वो भी कोई contribute नहीं कर पाता उस सोसाइटी में, and it proves him an ultimate loser. Okay, thus in conclusion हम ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर है ओल्ड मैन का इज़ अ जेन्यून रिप्रेजेंटेशन ऑफ absurdity and the problem of existence. So we can also say that the Cheers is an absurd play or absurd tragic farce. So here I stop.